हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु यीशु मसीह के ये आखिरी शब्द जो उसने अपनी क्रूस से कहे। And there are not many words actually that he spoke. बहुत से ज़्यादा शब्द नहीं दिए, कोई बड़ा प्रचार उसने नहीं किया, but they are important today because of who uttered these words. हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शब्द किसने कहे उसकी वजह से महत्वपूर्ण है। कहां पर कहे गए उसकी वजह से महत्वपूर्ण है। क्यों कहे गए उसकी वजह से महत्वपूर्ण है। और उनका आज हमारे लिए क्या अर्थ है इसके लिए महत्वपूर्ण है। Why they were spoken, by whom and where they were spoken, and what they mean to us today. Not very many words, but they are important because of these things. They are precious to us as the followers of Jesus Christ because they were our Savior's last words. खुदावंद के आखिरी वाक्य थे। हमारे अजीज जब इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, we hang on to their last words. कोशिश करते हैं कि उसका कुछ तो कहे हमसे बोल और बातचीत कर। हमें से अपने अजीजों को हमने सबने खोया है, माँ बाप भाई बहन। And if we have the privilege of being there with them at that deathbed, हम चाहते हैं कि कुछ तो भैया हमसे बोले। उसके बाद जब वो अपनी सांस छोड़ देते हैं, उसके बावजूद भी पत्नी पति बच्चे माँ बाप क्या बोलते हैं उनसे। मालूम है कि वो सांस निकल गई है, चले गए, अरे भैया कुछ तो मुझे बोलो, प्लीज टॉक टू मी, टॉक टू मी। And therefore these words spoken in agony in the darkest hour the world has seen are important to us because at that moment in the darkest hour दुनिया के सबसे अंधकार भरे घंटों में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारा उद्धार खरीद रहा था। He was having the deal of the day, the deal of the world, the deal of the history, and that is he was purchasing our redemption, our salvation, and therefore he spoke these words. पहला वाक्य और आखिरी वाक्य दोनों एक शब्द से शुरू होते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए सबसे महत्वपूर्ण था और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा शब्द है वो? पहला, हे पिता, Father. And the first word was a word of pardon. हे पिता इन्हें क्षमा कर, जैसा हमने सुना। And the last word again begins with Father, is a word of peace. हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता। The most peaceful thing that you can do if you are allowed to do that actually. Not many people are allowed to do that. We can be taken away in a snap. एक क्षण में ही हमारी आत्मा हमसे ली जा सकती है और किस परिस्थिति में कहां पर होगा किसको पता नहीं। Actually this was a prayer that was in the heart of Jesus because he prayed it every day when he went to bed. It's a prayer taken from Psalm 31 verse 5. ज़बूर 31 उसका 5वां पद मेहरबानी से कोई पढ़ दीजिए। Psalm 31 verse 5. Into your hands I commend my spirit. A prayer that every Jewish child learned from his childhood, and as they went to bed they used to pray this prayer, and Jesus must have learned this prayer from his mother Mary. यीशु मसीह ने भी ये प्रार्थना अपनी माता से सुनी होगी और उसके दिल में उसके जहन में थी और अब अंतिम समय में जब उसका शरीर पूरा थक चुका है, जैसे भाई संजीव ने भी बताया, वो he cried out physically and spiritually that I am thirsty.
गत्समनी के बाग में जब हम देख रहे हैं, जब वो अपने स्ट्रगल कर रहा था, तो वहां पर जो उसके स्ट्रगल, स्पिरिचुअल और फिजिकल स्ट्रगल थी, उसकी वजह से उसका पसीना खून के रूप में बहा. He almost was thirsty at the very point of Gethsemane prayer. उसके बाद से उसको एक क्षण भी आराम करने के लिए नहीं मिला. They literally dragged him into the court of the chief high priest of the day. And there he was slapped left and right. His beard was pulled. His cloaks were taken away from him. And the lashes, 40 lashes that he suffered on his back. 40 कोड़ों की मार जब उसने अपने शरीर पर चढ़ी, तो मेरे प्रिय, वो किस प्रकार के कोड़े थे? वो एक चादर को, शीट को बनाकर मारने वाले कोड़े नहीं थे जो मैं और आप बचपन में खेलते आए थे. हमने भी खेला है. ये निशान आप देख रहे हैं, यहाँ है कि यहाँ है, कहाँ पर? ये उसी कोड़े का निशान है. बच्चों के साथ हम भी खेल रहे थे, चादर का कोड़ा बनाकर. एक ने ऐसा मारा कि पैर में लटका और हम पत्थर पर गिर पड़े. It was not that kind of a koda that Jesus suffered on the cross, before the cross. रोमी सिपाही और आर्मी अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे. They were the most cruel soldiers in the world, in the history of the world. किसी के ऊपर कोई तरस नहीं खा सकते थे जब वो आर्मी में थे, सिपाही थे. And it shows, the historical research shows, the archaeological research shows कि जो कोड़े रोमी सिपाही लोग इस्तेमाल किया करते थे, वो लेदर के बने थे और उसमें कीले, कांच के टुकड़े, शीशा और हड्डी, जानवरों की जो हड्डियां जमा करके उसमें वो बांधे जाते थे कोड़े की लाश में. And once you imagine one lash going on your naked back, it pulled the skin away, not just the skin, the mass away. एक नहीं, दो नहीं, 40 कोड़े यीशु मसीह ने अपनी नंगी कमर पर खाए. और उसके बाद इसलिए जब वो क्रूस पर टंगा हुआ था, वो चिल्ला उठा, मैं प्यासा, because he was literally drooping, exhausted, dehydrated, literally. And then remember, कोड़े खाने के बाद ही उसको तुरंत क्रूस पर नहीं अटका दिया गया. What was asked of him? To carry his own heavy cross. अपनी ही क्रूस को. एडमिंटन की जैसी सड़कें नहीं थी. The Via Dolorosa, जिस पर क्रूस पर लेकर के प्रभु यीशु मसीह चला, वो आज भी जाकर आप देख सकते हैं. It's not a paved, cemented or tar road. It is made of heavy boulders. And they are not as neatly laid as the tiles that Roger did for us in the basement. No, they are not. Because each boulder is separated from the other. And there is a gap. And there is no machine to roll them over and to polish them. कोई ऊंचा है, कोई नीचा है. Imagine for a moment Jesus carrying that cross hanging behind him, and it stacks to those heavy boulders. And then he pulls it forward, and then again it gets लंबी यात्रा जिसमें यीशु कई बार गिरा, और इतना गिरा, इतना कमजोर हो गया कि खुद रोमी सिपाही जो किसी पर तरस नहीं खाते थे, उनको तरस आया और उन्होंने एक काले व्यक्ति को पकड़ करके, साइमन ऑफ साइरेने, उसकी क्रॉस उसको ले जाने के लिए बोला, क्योंकि he could not carry further. और अब आखिर में जब सब कुछ उसने accomplish कर दिया, as we just heard, it is finished, he cried out. There is sense of completeness for the work that he has come to do. Jesus says this prayer, Father, into your hands I commit my spirit. मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूँ. This is the relationship that God has established through the cross.
वो प्रेयर जो भजन 31:5 से उसने लिया, उसमें एक शब्द प्रभु यीशु मसीह ने जोड़ दिया, और यदि आप उसको ध्यान दें तो वही शब्द हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। Nobody ever prayed that prayer by the word Father, because the Jews would never call God their Father. It is only on the cross when he is hanging there that he has joined Father with the humanity and humanity with humanity, that he adds the word Father to that traditional historical prayers that Jews had prayed for centuries, by making a relationship possible for you and for me. हे पिता, ये प्रार्थना मैं तुझसे करता हूँ क्योंकि तू मेरा intimate father है. It's a relationship, not a religion. मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूँ. A relationship has been made possible between God and mankind through the cross on which Jesus said these words. And these are the last words of committal. एक समर्पण के शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने इसमें कहे. Remember, he is thirsty, he is dehydrated completely, and there is hardly any breathing going on at this moment. Most of you are in the medical field. You know what I mean. What is going on at this very moment? He is literally gasping for air. वो एक सांस के लिए तड़प रहा है, और तब भी उसने बड़े जोर से चिल्ला करके अपनी सारी स्ट्रेंथ को जैसे इकट्ठा करके उसने चिल्लाया, हे पिता. Everybody had his attention. Into your mighty hands I commit my spirit. Why did he has to yell with a loud voice? Couldn't his father hear his thoughts? Yes. But there was a purpose. He wanted those words to ring in the world. He wanted those words not to be heard just by his father, but by the people around him, by the world, by you and me, that nobody takes his life. It is he who is voluntarily giving up his spirit into not Satan's hand, but into his Father's hands. It's a voluntary act. God has sent him. He's giving up his spirit to his Father. Father, into your mighty hands I commit my spirit. His pitched voice, his loud voice was meant that he could make it the whole world hear, and continues to ring in the world. Nobody took the life of Jesus from his hands. It was not the Jewish people. It was not the Roman soldiers. But Jesus himself gave up his life into his Father's hand. And it is also a prayer of dedication, commitment, and proclaiming his faith in the darkest hour of his life. सारी परेशानियों के मध्य में, सारे दर्द के मध्य में, सारी बेइज्जती के मध्य में, सारी agony के मध्य में, despite the sense of the horribleness that was going on right now at Golgotha, and the loneliness that Jesus felt at this moment, जब अकेलापन उसको घेर चुका था, he makes a dedication and he makes a proclamation of his faith, of his relationship to the Father. अपना रिश्ता और अपना समर्पण इस सब के मध्य में भी पिता के सामने वो करता है. And it's not yet resurrection. It is not that his kingdom has yet come. यह अभी उसका राज्य नहीं आ गया, उसका पुनरुत्थान नहीं हो गया, वो जी नहीं उठा, लेकिन उससे पहले ही वो अपने उस अंधकार भरे घंटों में भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता अपनी आंखों को, अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं. It is easy to confess Jesus when everything is going right with us, my dear friends. बहुत आसानी से हम अपने आप को मसीह कह सकते हैं, ईसाई कह सकते हैं, जब सब चीजें बढ़िया चल रही हैं. But in the circumstances that Jesus was in, he proclaimed
his faith to the world. Far away in the world, yet there are so many people today who do not know about this Savior who died for you and me. Will we proclaim, or will we help proclaim this faith to the dying world? Jesus was always submitting to God throughout his life. अपने पूरे जीवन में यीशु ने अपने पिता के हाथों में अपने पूरे जीवन को सौंप दिया. Now when he is dying, when it is difficult for him to breathe, जब उसके लिए सांस भी लेना मुश्किल है, just before he dies, he again makes a commitment. Into your mighty hands, Lord, I commit my spirit. May we learn to commit. May we learn to submit. May we learn to proclaim our faith, even in our darkest hour. God bless us through these words.